और आज की क्लास में मैंने कहा था डिफरेंट स्कूल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि कंसेप्ट्स रिगार्डिंग न्याय एंड परसेप्शन ये सारा क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज हम वही रीड करते-करते हम वो सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज शायद आज हो सकता है कि क्लास थोड़ी डिले हो। अगर क्लास थोड़ी डिले होती है तो आई थिंक दिस विल बी बेनिफिशियल। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि लाइव लाइव हो गया कि नहीं। जस्ट फॉर माय ओन सेक क्या देख लो कि इफ इट इज इफ वी आर लाइव। ऑलराइट, नाउ वी आर लाइव। इट्स क्लास 4। आई जस्ट वांटेड टू चेक दैट, क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया था उससे पहले नोटिफिकेशन आया था कि फेल टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। हम न्याय दर्शन के बारे में बात करेंगे। इट सेज दैट अकॉर्डिंग टू न्याय परसेप्शन और प्रत्यक्षा। परसेप्शन और प्रत्यक्ष जो जो हम बात करते हैं, कई बार प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो वो वाला प्रत्यक्ष है जो हमें सामने दिखता है। तो इन न्याय फिलॉसफी हम आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप के वो प्रमाण एक्सेप्ट करते हैं। अलग-अलग स्कूल्स अलग-अलग टाइप के प्रमाण्स एक्सेप्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग में ही दीज़ थिंग्स आर डिफाइंड। अकॉर्डिंग टू न्याय, परसेप्शन और प्रत्यक्ष इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज और प्रमाण, यानी कि जो सामने हमारी चीज़ें घट रही है, वो फर्स्ट नॉलेज होगा। देखिए, कई बार हम न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ जो हम देखते हैं, वो दैट इज़ द फर्स्ट नॉलेज कि वो एक्चुअल में उस एरिया की वीडियो दिखा रहे हैं। इन वीडियो वर्ल्ड यू नो के जब से एआई आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तब से इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट टू एक्चुअली फाइंड व्हाट इज ट्रुथ। सारी लड़ाई उसी पे है। तो अब जब आप कोई चीज प्रत्यक्ष देखते हो, अपने सामने देखते हो होते हुए, दैट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज और प्रमाण जो मैंने अपने सामने देखा। यानी कि जब हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्च भी हम करते हैं, तो इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च एज वेल, अगर हम कोई चीज़ किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ अपने सामने करते हुए देखते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण। Perception is a definite or true cognition of object produced by sense objects contact, यानी कि sense objects means eyes, eye की sight, hearing। ये जब कांटेक्ट में आते हैं तो जो डेफिनेट और ट्रू कॉग्निशन होगा दैट इज परसेप्शन। यानी कि अगर मैं कहूँ कि फलाने व्यक्ति ने फलाना फलाना कुछ किया, दैट इज नॉट परसेप्शन, बिकॉज आई हैवंट सीन दैट। किसी और बंदे ने किसी और कंटेक्स्ट में कुछ और देखा, that is never related to perception, that is something you are actually giving a testimony। but अगर that person whom you are talking about who has actually seen the things are happening, और जब वो कहेंगे तब उसको प्रमाण माना जाएगा, यानी कि उसने कोई चीज अपने सामने होते हुए देखी है। For example, the perception of the blue book in front of me is to contact that occurs between my eyes and the object, the blue book। यानी कि अगर पीछे का मटेरियल अगर आप देख रहे हैं एंड अगर ये सारी चीजें भी हम देख रहे हैं, तो हमारी आई साइड पीछे का कलर कंटैक्ट कर रही है, देन वी आर सीइंग, तो इट इज डायरेक्ट प्रमाण। अगर जो आप मेरे को देख रहे हैं लाइव, दैट माइट नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रमाण, क्योंकि यू आर नॉट सीइंग मी मेकिंग द लाइव, यू आर जस्ट सीइंग मी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, और जो वीडियो आप तक पहुंच रहा है दैट इज समथिंग अनदर लेयर। बट अगर कोई यहाँ पे आए और वो देखे कि हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड प्रमाण। According to Gautama, now this is not Gautam Buddha. This is, so there are two Gautamas that you will be seeing in the lectures ahead. Gautama was the primary person who actually of the Nyaya schools. So perception means non-erroneous cognition, which is produced by the intercourse of sense organs with the object. That is why I said
कि जब मैं लाइव जा रहा हूँ, मैं व्हेनेवर आई एम गोइंग टू लाइव, तो उसमें यू हैव वन बैरियर इन बिटवीन, इंटरनेट हो गया, स्क्रीन हो गई, तो जो आप स्क्रीन देख रहे हो दैट मीन्स यू आर सीइंग द लाइव वीडियो, दैट इज प्रमाणा, बट लाइव वीडियो ऑफ होम दैट कांट बी सेड, क्योंकि इन एआई वेरियस थिंग्स आर पॉसिबल, राइट? दैट इज व्हाई इट इज सेड सेंस ऑब्जेक्ट्स विद द ऑब्जेक्ट्स, जो हम ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं। परसेप्शंस डील विद 5 इटर्नल सेंस ऑर्गन्स, नेमली साइट, चक्षु, हम हिंदी में उसे चक्षु बोलते हैं, नेत्र, सेंस ऑफ स्मेल, घ्राण, sense of smell, जो हम smell we do it, and sense of sound, श्रोता, sense of touch, त्वच, many people write it त्वक, त्वच, so त्वचा, that is why the skin is called त्वचा, because it is only organ with which we can feel any object around, and the sense of taste, rasana, rasana मतलब the taste. These 5 sense organs respectively perceive the physical qualities of color, smell, sound, touch and taste in the object. यानी कि all these physical qualities are given by them. Now classification of perception. Nyaya school of Indian philosophy distinguish between lockic and alockic. These are also known as ordinary and extraordinary perceptions. यानी कि something which we can justify with the help of science is lockic. मैंने ये बॉल है, ये बॉल को ऐसे किया, इट्स साइंस, बिकॉज मैंने ऊपर किया और नीचे वो आउट ऑफ ग्रेविटी आई, दैट इज साइंस, दैट इज लॉकिक. लेकिन many a times you will see all the sadhu mahatmas producing wind energy और आंधी ले आना या फिर हवा को रोक देना, ये सारी चीजें अलौकिक, बट हम देख पा रहे हैं. मतलब कि अगर हमारे कोई महान साधु संत आ जाए और वो हमारे आगे जस्ट एयर को पूरा बंद कर दे, it just finishes, then that is extraordinary perception. Now it was very favorable. हम आजकल साइंटिफिक वे में पूछते हैं हर चीज को कि हाउ इज इट साइंटिफिक इनफ, व्हाई इज इट साइंटिफिक. तो ये सारी चीजें, these are the things that are that is in the classification of न्याय शास्त्र. According to न्यायिकास मतलब those who people who testify the all the characteristics of न्याय school. And on न्यायिकास, the distinguishing between the two depends upon the manner in which the senses come in contact with their objects. यानी कि ये डिपेंड किस पे करते हैं कि किस वे में हमारे जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके साथ कांटेक्ट में आए हैं. In case of lockic or ordinary perception, there is usual sense object contact, whereas in the case of alockic or extraordinary perception, the object is an ordinarily presented to the sense organ. In other words, the object is perceived by sense organs through an unusual medium. अब अलौकिक दर्शन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ. ड्यूरिंग महाभारत, not everyone was able to see Lord Shri Krishna गिविंग द उपदेश ऑफ भगवद गीता टू अर्जुन. सारे लोग नहीं देख पाए थे क्योंकि वो टाइम फ्रेम रोक दिया गया था. द एंटायर सृष्टि वेंट ऑन फॉर अ हॉल्ट for some time so that they can stop the time in which he could deliver his summons, and during that time only 2 people were able to see this entire process. Probably one is Sanjay, who was giving it to the giving it to his king. Other one was, you tell me in the that's homework. When he was later on saying that what is happening, he was just saying कि पूरे युद्ध में सिर्फ आपका सुदर्शन चक्र था, कोई जो लड़ रहा था वो भी आप थे और जो मर रहे थे वो भी आप थे. तो you were in all the beings that were fighting in that war. वो कौन थे, वो आपके लिए होमवर्क है. तो वो उनकी जो दृष्टि थी वो अलौकिक दृष्टि थी. The ordinary or lockic perception are of 2 kinds: eternal perception or manas, external perception or bahya. यानी कि internal perception को जो it could be also internal thoughts as well. यानी कि अगर आप अपने internal thoughts भी सोचते सोचते परेशान हो रहे हैं या यू आर थिंकिंग मल्टीपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, इन दोज केसेस दैट इज अंतः मन में आप सोच रहे हैं कि क्या क्या होगा, दैट इज इंटरनल परसेप्शन एंड एक्सटर्नल परसेप्शन. आपके इंटरनली क्या आपको लग रहा है, राइट?
In the former, mind comes in contact with the psychological state and processes like affection, cognition, desire, pleasure, pain, etc. Like, it's not in front, but internally you are feeling affection. Like you have kittens or pets. Like I have pets. Whenever जब भी मैं अपने pets या kittens को देखता हूँ, I feel that love and affection to them. That you can't see, but it's in your mind, manas. Similarly, if you see any person who is going to harm you, तो वो anger, वो भी आपके मन में ही होगा, आप दिखा नहीं रहे हो उस वक्त. आपने दिखा दिया तो फिर वो बाहर आएगा, बाहर आएगा, but जब तक आपके मन में है, that is manas. External perceptions or later perceptions takes place with the help of 5 external sense organs, namely sense of sight, touch, sound, smell, taste, when they come in contact with the object. यानी कि जब आपके सेंस ऑब्जेक्ट्स में की बात आएगी तो ये बाह्य परसेप्शन यानी कि एक्सटर्नल परसेप्शन कहलाएगा. The 5 external sense organs are composed of panchbhutas, namely 5 elements: fire, air, water, ether and earth. ये पंच महाभूता से हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं बने हैं. That is why they are able to sense things externally. That is external perception or बाह्य. Therefore there are 6 different kinds of लौकिक and ordinary perceptions. यानी कि लौकिक ordinary perceptions जो है आपकी वो 6 different type की perceptions होती हैं. Visual perception चक्षुषा जो आप सामने देख रहे हो, auditory perception जो आप सुन रहे हो, tactual perception स्पर्श जो आप स्पर्श कर सकते हो, gustatory perception रसना and olfactory perception घ्राण राजा. Internal perception or mental perception manas. These are all the 6 kind of perceptions. On the other hand, there are 3 kinds of अलौकिक or extraordinary perceptions. अलौकिक और extraordinary perceptions में सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा and योगजा. सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योगजा. अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. सामान्य लक्षणा, according to Nyaya, Samanya Lakshana perception is also called the perception of classes. It includes the concepts of universals. According to Nyaya, universals are regarded as a distinct class of reals and their inherent particulars. For example, the concept of cowness. Universal concept of cowness inheres in all the particular cows. The perception of cowness is possible due to Samanya Lakshana perception. In other words, universals are perceived extraordinary. See, like in every human there is humanness. Like that is why you are able to differentiate between a human and any other animal. वैसे ही हम ये अलौकिक दर्शन होता है जिसमें हम ये that is normal that you are seeing daily, but हम ये कभी उसको थैंक नहीं करते हैं कि यार ये इतने सारे क्रिएचर्स बने कैसे. हम भी जो डिफरेंट क्रिएचर्स अभी अगर बनाते हैं अगर मूवीज में या फिर कहीं पे भी, वो सिर्फ उन एनिमल्स के या फिर उन चीजों के बेसिस पे बनाते हैं many a times. जैसे फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल इज पॉकीमोन्स. The first few animals and everything, you will see that they are actually based on the natural elements and the animals flora and fauna as well. Even the names go by that thing. Then even if you look at the heroes or something, instead of giving the property to that person, we give the property and the organ to that person. So if a person is meant to fly, they will have wings. And many of the movies you will see that obviously whenever you have to make the person or superhero who actually flies, तब उसके wings होंगे, हर हालत में होंगे, right? Now we look for Gyan Lakshana perception. This perception is also called the complicated perception through association. In this case, Gyan Lakshan perception, the object is not directly presented on the sense organs, but it is revived in memory due to past recognition of the object, and it is perceived through presentation. For example, sandalwood looks fragrant, ice looks cold, and stone looks hard. This is Gyan. Ab before, suppose there was a research which was done, एक research की गई थी जिसमें छोटे छोटे बच्चों को जिनको snake की properties नहीं पता है, they were playing with snakes and all the snakes were non venomous.
and they were even shown to the parents as well. So parents were also shocked कि ऐसे क्या है. But the thing was, those kids don't know the main theory behind snakes. कि snakes होते क्या हैं, why they attacked, when they attack, and the snakes were trained. कि अगर वो हल्का सा he plays, that kid plays with that snake as well. The same thing won't be possible to the adults like us, because we have gyan lakshana, we have gyan of that snake. Okay, that are venomous. We have even read in books that we should never tame a snake. You never know when he flaws and he's preparing to eat its own owner. There are theories कि जब snake को आप पालते हैं, if it has not stopped eating for 10-15 days, he is actually preparing to eat you next. If this all gyan is there, no one will play with the snakes. Right? Only people who play with the snakes will be जिनको ज्ञान है कि हाँ, how to handle the snakes. Like snake catchers होते हैं, they also sometimes get venom in them and they die, because they presume that these things won't happen, but actually whatever the properties of snake that is there, that needed to be there in your memory. अगर वो उसकी मेमोरी में नहीं है, अगर बच्चे बिल्कुल छोटे, they don't know what is snake, they don't know what looks like danger, they don't know anything like that, then in that case जो भी snake उनके पास है, they will start playing with. That is ज्ञान लक्षणा perception. Then is yogaja perception. It is intuitive and immediate perception of all objects of the past, present and future. This form of perception is only possessed by yogis or the liberated souls through the power of meditation. Hence, the supra-sensuous and supra-related in nature. यानी कि yogaja perception, whatever they think of past, present and future. Now there are many theories related to past, present and future. Like if we are knowing what is happening in the past, then it won't happen. Okay, this is also one of the theories कि अगर हम past में ही present को आगे देख लेंगे तो many a times it won't happen. तो that is why people who are having yogaja perception or doing yoga, and they are perceiving what would happen in the future, they refrain from telling what is happening, what is going to happen in the future, because they know that it will be disastrous for the person who knows. Like if I know by doing something this will happen, definitely I'll either do or I won't do. But the entire concept of न्याय दर्शना is based on कर्म योग, कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी. That means फल मिलेगा, हर कर्म का फल होता है, बट वो कर्म की इच्छा नहीं होनी चाहिए. राइट? अगर हम आगे चलते हैं, the two stages and definition of different न्याय thinkers and pratyaksha or in pratyaksha or perception. Now in the previous lectures I have been telling you different schools, there are different schools and different schools are having their different thought processes. हर एक school का हर एक different thought process होता है, and they actually argue on that. But no one is in the race of number one thinker. No one you will see that okay, he is the number one thinker, or he is the number one thinking school, or he is the it is the number one thought process school. No, there was no race for that. According to Nyaya schools, there are two stages of perception, namely indeterminate and determinate perception. The former is called nirvikalpa and the later is called savikalpa. It is important to note that there are not the two different kinds of perceptions, rather these are the two stages of perception. In other words, indeterminate or nirvikalpa is the former stage of perception and determinate and savikalpa is the later stage of perception. These two can only distinguish or divided in through and not in reality, in thought and not in reality. Indeterminate or nirvikalpa perception, it deals with the bare sensation or simple apprehension of the object. In other words, it is the stage of bare awareness where the object is presented without any characterization. It is logical in nature, but it is knowledge, but its knowledge is logical in nature. It is psychological in nature, but its knowledge is logical in nature. Nyaya says it is undifferentiated and non-relational in nature. As a result, it is free from assimilation, discrimination, analysis, and synthesis.
According to Nyaya, we sense this perception and due to which indeterminate perception is inferred into perception judgment. In other words, it is the result of logical deduction. Okay. Indeterminate means हमें उसके प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे ज्ञान होने की वजह से, थोड़ा उसका परसेप्शन होने की वजह से, वी आर गेटिंग अ सेंस ऑफ दैट. जैसे पहले बोलते थे बिल्ली को पट्टा बांध दो ताकि वो बिल्ली जहां जहां जाए पता लगे. नाउ व्हेनेवर आई कांट सी द कैट जिसके गले पे पट्टा लगा है या फिर जिसके गले पे बेल लगी है, बट डेफिनेटली आई विल हैव अ परसेप्शन कि कैट कहाँ है, वेदर शी इज ओके और नॉट. अगर बहुत सारी रिंगिंग बेल बज रही, दैट मीन शी इज इन डेंजर और शी इज रनिंग टू एंड फ्रो. अगर वो नहीं बज रही है, इट्स स्लीपिंग. बट वो परसेप्शन और ज्ञान है, दैट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट. वी आर नॉट डिटर्मिन्ड बट वी आर जस्ट गेसिंग बिकॉज ऑफ द things that we are getting or because of the some of the reasons that we see around. जैसे अगर कहीं पहाड़ पे आग लग जाती है और पहाड़ पे आग लगी हुई है and you see a smoke, because of the smoke, because it is associated with fire, then only you get to know अच्छा आग लगी हुई है इसलिए smoke है, otherwise ऐसा नहीं होता, right? Determinate perception of सर्विकल्प. This perception is determined and relational in nature. It deals with assimilation, discrimination, analysis, and synthesis. It is representational in nature. Here the perception is characterized. In other words, all the attributes like name, genus, etc. are understood. We feel this perception. नहीं, अब वो वही cat पे आ जाते हैं. वही cat अब आपके आगे आ गई है. You will see the color, you will see the catness in that. Okay, it's resembles the cat. Then you will see the patta. Okay, it's my cat. All these things you will come to know when सर्विकल्प means when आप उसके सारी प्रॉपर्टीज आप अपने सामने प्रत्यक्ष देख लो, दैट इज सर्विकल्प. पहले आप जस्ट अनुमान लगा रहे थे, अभी आप उसको अपने सामने देख रहे हैं. Definition of different न्याय thinkers. According to वात्सायना, these are all न्याय thinkers. ये सारे न्याय thinkers यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं. तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें लिख लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये आएंगे ही आएंगे. जब न्याय फिलॉसफी की बात आती है तो यूजीसी नेट हमेशा आपको ये चीजें जरूर पूछता है. According to Vatsayana, under determinate perception, the object is perceived with name, whereas under indeterminate perception, the object is perceived without name. See, when I said undeterminate or nirvikalpa, you are not associating any name with it. You are associating a condition, sleeping, walking, running, and various other things. तो उसके बारे में बात की गई है. According to Jayant Bhatta, indeterminate perception apprehends a substance or an object without a name and any association, whereas determinate perception apprehends a substance or an object with a name and with association. ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको पहाड़ का दिया था आग लगने का, कि जस्ट आप you are seeing the fire growing out from the mountain, and with that only you are saying okay, this is fire and this is lethal, and because you have in the past seen smoke and smell associated with fire only, तब आप उसको निर्विकल्प में डालेंगे. जब आप सविकल्प पे डालेंगे, जब आप वहां पहुंच गए और आपने मटेरियल देख लिया, कलर देख लिया, प्रॉपर्टीज देख ली, सब देख लिया, then you are able to put it in the सर्विकल्प न्याय. According to Gangesh Upadhyay, Nirvikalpa is non-relational, comprehend, devoid of all associations of name, genus, differentia, etc. Yeah, he is right. Nirvikalp means we are not able to see any of the properties. We are just giving anumana according to the symptoms that we are receiving. According to Annam Bhatta, Nirvikalpa is an immediate perception of an object as well as its qualities, but without the knowledge and relationship between them. Right? Next चलते हैं. त्रिपुटी संवित. This is ये त्रिपुटी संवित पे 2 बार यूजीसी नेट पे सवाल आए हैं. I don't remember the years, but I think त्रिपुटी संवित में 2000 it came previous year definitely.
द थ्योरी ऑफ त्रिपति संवित इज एडवोकेटेड टू प्रभाकरा, ये भी न्याय ही चल रहा है सारा, और त्रिपति संवित इज रिलेटेड टू प्रभाकरा. According to the theory, the act of cognition, the knower, the known and the knowledge are all simultaneously revealed. यानी कि प्रीवियस में मैंने बोला कि आप पट्टा देखोगे, यू विल सी द शेप, यू विल सी द कैटनेस, sorry, you will see all these things, but whenever you are talking about theory by प्रभाकरा, and जहाँ पे त्रिपत सम्मत आ जाता है कि सारी चीजें आपको इन एन इंस्टेंस हो रही है, जो कि साइमल्टेनियसली हो रही है. हमारा थॉट प्रोसेस इज वेरी फास्ट, सो जब भी हमारा माइंड किसी चीज को प्रोसेस कर रहा है, दैट शोज कि हाँ, all these things are being covered, and that is why we are able to perceive it. According to the theory, the act of cognition, the knower, the known and the knowledge are all simultaneously revealed. In other words, knowledge reveals itself as well as the knower and the known. यानी कि ये सारी चीजें इकट्ठी ही होती हैं. For example, I know this. Here all the three are revealed together. According to Prabhakara, perception is always direct and immediate cognition. Obviously, जब आप एक cat को देखते हैं या फिर you see any other animal or any other human, all the three cognitions हमें एक साथ ही cognize होते हैं as per त्रिपुटी संबंध. हाँ, आगे और भी आएंगे इसकी थ्योरीज, तो ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमें याद करना व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट. ऑब्वियसली दिस इज वेरी मच सिमिलर टू सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी में भी डिफरेंट थिंकर्स हैव कम और वो अपना ज्ञान बांट के गए हैं. मेनी अ टाइम्स आई फील एज अ प्रोफेसर एज वेल कि वो जो सारे ज्ञान उन्होंने बांटा है वो कॉपी पेस्ट यहीं से किया है, because if you see many of the theories that sociologists have given, these things were already there in our Nyaya Shastra. Nevertheless, on the other hand, inference and memory are always indirect cognitions. In perception, the object, the known, the self, the knower, and the knowledge are all simultaneously revealed. Hence, the self is the subject of knowledge according to Prabhakara. Now, next is Gyatatvada, which the theory is Kumarila. Again, he is a Nyaya philosopher. ज्ञातात्वादा इज एडवोकेटेड बाय कुमारविला. यानी कि जैसे सपोज इमेजिन कीजिए हम डिफरेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं, एंड आई हैव डेवलप्ड ऑल दीज डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, राइट. अब नो टीचिंग मेथड आई कैन से इट्स बेस्ट, क्योंकि देयर आर वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, एंड विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स कम्स डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज जो हमें देखनी पड़ेंगी, राइट. तो the theory of Gyatatvada is advocated by Kumarila. Kumarila's theory of knowledge is called Gyatatvada. ये दो बार लिखा हुआ है, वाह. Knowledge is brought by the activity of the self, which results in producing consciousness of objective things. यानी कि जब तक हम एक्टिविटी करेंगे कुछ भी, it's all these theories are in a generic form. It is not related to any one example, so it can be related to various examples. कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे अगर मैं लाइव कर रहा हूँ, तो उसके रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो इनकॉन्शियस होगी. आई एम कॉन्शियस इनफ, आई नो कि आगे कैमरा है, आई नो आई एम टेकिंग अ लाइव, आई नो आई हैव अ स्क्रीन डिसाइडेड जिससे मैं रीड करना है, तो आई एम कॉन्शियस अबाउट द ऑब्जेक्टिव थिंग्स. जो ऑब्जेक्टिव थिंग्स है उसके लिए अकॉर्डिंग टू हिम कॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड्स not in the further cognition of that cognition, but in the cognizedness of the object. The act of knowledge deals with knower or gyata, no object of knowledge, gaya, and instrument of cognizedness of the object or gyatata. In simple words, according to Kumarila, cognition is not directly perceived, but it is inferred from the cognizedness of the object produced by cognition. So knowledge is inferred and it is free from defects. जो भी हम knowledge लेते हैं वो डिफेक्ट से फ्री है, यानी कि हम उसमें किंतु परंतु नहीं लाते हैं. दैट इज व्हाई आई सेड के प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती. दैट मीन्स whatever we are seeing that is happening in front of us, we don't see all these things that are happening.
We are seeing all these things in a way, okay, that is the pure knowledge that we are getting. So the knowledge is inferred and it is free from defects. Now is praman abhav. Now, नाम से ही पता लग जाना चाहिए प्रमाण अभाव. The Prabhakar does not accept abhav or non-apprehension or non-perception as an independent source of knowledge or as an independent pramana. According to him, the cognition of something non-existence is inferred from the non-perception of something that would have been perceived if it were there or present. For instance, when we perceive the mere space and no jar in it, we know that there exists no jar. According to Kumarila, abhava or non-perception or non-apprehension is an independent pramana. It cannot be reduced or perception because via perception we gain the knowledge only when the thing or the object exists or when there is direct sense object contact. For example, we perceive not merely empty space but the space which is filled with books, table, papers, etc. That gives us the knowledge of the non-existence of the jar. We apprehend space as not qualified by the presence of jar. Therefore, we accept the negative knowledge. Hence, the abhava or the independent pramana. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर जैसे मेरे टेबल में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ crocodile is not present in my room. It's not present because first crocodile I perceive in sea, lakes, wherever they are there, where they can get the food. Obviously, and the food as well, but obviously they won't climb up the building and come here. That is why, as per Praman Abhava, it says it is also a part of cognition, where we are able to judge कि ये चीज वैसे भी नहीं हो सकती. जैसे I opened the room and I saw that horse was not there. अगर मैं room की जगह stable बोलता, then it was not a praman abhava. That means it is something problem. But when it is room, then it is praman abhava, क्योंकि मुझे पता है ये चीज वहां पे वैसे भी नहीं होती है और है नहीं, तो that is praman abhava, right? नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ अन्विता विधानवादा. ये सवाल इस यूजीसी नेट जो 2025 में हुआ उसमें आया था. The theory is advocated by Prabhakar again. According to him, the meaning of a word can only be known when they occur in a sentence joined with some duty or injunction. So words express meanings when they are related to an injunction, otherwise it is a case of remembrance. Simply put, meaning deals with injunctions and not with memory or recollections. Words have letters and letters have potency or shakti. So letters are direct cause of verbal testimony or shabd or verbal cognition. Hence the cognition of meaning in the word is not obtained via sense perception. यानी कि मैंने जस्ट एक वर्ड लिखा बॉल. You can't perceive anything with the ball. What ball? Are you playing with ball? Are you manufacturing ball? Are you cutting the ball? What? Now, theory of Anvita Bidhanvada is saying that एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज तभी डिफाइन हो सकती है कि जब मैं उसको सेंटेंस में लेके आऊं. एक वर्ड कभी भी टेस्टिमोनी नहीं बन सकता. मैं बॉल से खेल रहा हूं, दैट इज अ टेस्टिमोनी. बट बॉल अगर मैं सिंपल बोलूं, इट डजंट से मच. यही सेम चीज संस्कृत और हिंदी में है. संस्कृत में बस डिफरेंशिएशन ही है कि अगर आपका सेंटेंस आगे पीछे भी कर दिया जाए, द मीनिंग वुड रिमेन सेम. But this won't happen with English. That you will learn in Panini's Ashtadhyay chapter. You can also refer to Indian Knowledge Systems course in UGC or in Swayam Neptel. स्वयं में आप ये कोर्स देखें तो उसमें भी ये सेम कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है. आप वहां पे जाके देख सकते हैं. The theory of तन्मयवादा. First is अन्विता भिधानवादा. अन्विता भिधानवादा मतलब आप
जो अकेला वर्ड से पूरा सेंटेंस इन्फर नहीं कर सकते हैं, इसे परसेप्शन में नहीं माना जाएगा। लेकिन जब आप पूरा वर्ड लिखते हैं तब आप उसे परसेप्शन में मान सकते हैं, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वर्ड। Now, theory of Abhitanvayavada. The theory is advocated by Kumarila. According to Kumarila, the knowledge of meaning is due to word because word denote the meanings. In other words, knowledge is not due to recollection or apprehension, but due to denotion. Unlike Prabhakara, according to whom letters denote meaning via injunctions, Kumarila believes that word denote meaning because the relationship between the word and its meaning are directly cognizable. यानी कि बॉल है, अब उसका मीनिंग तो आपको पता ही है, दैट इज अभितन्मयवादा। अभितन्मयवादा ये कह रहा है कि अगर आप एक वर्ड भी बोलते हो, एक बॉल बोलते हो, तो उसका मीनिंग तो पता ही है बॉल, लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट आगे दिया जाए तो वो अब अन्विति विधानवादा में आएगा, जिसमें आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हो। लेकिन जब अभिधानवादा में कर रहे हो, आप कह रहे हो कि एक वर्ड, दैट वर्ड डिड नॉट मीनिंग बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड एंड इट्स मीनिंग आर डायरेक्टली कॉग्नाइजेबल। यानी कि बॉल जो मैं बोल रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ, तो दैट आर कॉग्नाइजेबल। आपको पता है पुराने से कि ये बॉल है, दिस इज अ बॉल, दिस इज सिलेंडर, not cylinder, this is spherical, and all these things are associated with the same thing, right? Again, now we come to Prabhakar Kumarika school of Purva Mimamsa. Many times Kumarila ko Kumarika bhi likhte कई लोग, so you have to be very careful while reading the questions. Validity of knowledge, the source of knowledge or pramanas, the theory of error or ख्याति, the concept of self, the concept of liberation. अब हम ये पढ़ेंगे। Jamini wrote the Mimamsa Sutra. ये भी सवाल पूछे जाते हैं, these are the very favorite questions of IKS and UGC NET. Jamini wrote the Mimamsa Sutras with 12 elaborate chapters which have laid down the foundation of Purva Mimamsa school of Indian philosophy. His sutra his work has been commented upon by a number of commentators. The two most important commentators amongst the list are Prabhakar and Kumarila Bhatta. The two schools with the Purva Mimamsa have been named after the two commentators, namely Prabhakar school of Purva Mimamsa and Kumarila school of Purva Mimamsa. Now, when we say Kumarila school of Purva Mimamsa or Prabhakar school of Purva Mimamsa, Prabhakar is the head or the main person who had a theory of knowledge and he developed the school out of it. And similarly with the Kumarila, who had his own theory, and he also had his own school of Purva Mimamsa. But the main subjects that we're dealing with is Purva Mimamsa. That is the initial part of Mimamsa. Sabra Swami, commentary on Mimamsa Sutras has been explained in both Kumarila and Prabhakara individually. They both share some similarities and differences on important philosophical concepts. Prabhakar's commentary is named as Brahati. प्रभाकर, ये भी एक सवाल है, बृहति किसकी कमेंट्री है? तो प्रभाकर्स कमेंट्री named as Brahati, which has further commented upon शालिकांता, upon by शालिकांता. तो क्या है जो मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, that is also commentary. तो it is a commentary on the commentary on the commentary, right? आपको एक मूवी याद आ रही होगी इससे. तो प्रभाकर्स कमेंट्री इज नेम्ड ऑन बृहति, लेकिन बृहति की कमेंट्री शालिकांता ने की है. On the other hand, Kumarila's work is divided into three parts: Shlok Vartika, Tantra Vartika and Tuptika. जो कुमारिला का वर्क है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है: श्लोक वर्तिका, तंत्र वर्तिका एंड तुप्तिका. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, प्रभाकरा वाज द प्यूपिल ऑफ कुमारिला, यानी कि प्रभाकर जो थे वो कुमारिला के ही बच्चे के स्टूडेंट थे. Who he called him Guru, and on account of superiority and intellectual powers, but according to some scholars, Prabhakar school is older than Kumarila. तो ये थोड़ा सा इसमें व्यंग्य भी हो सकता है और इसमें कंफ्यूजन भी हो सकती है, क्योंकि प्रभाकर का जो स्कूल है, प्रभाकर कुमारिला के बाद आया, वो उसके प्यूपिल बने.
बट एंड ही कॉल्ड हिम गुरु। बट अगर आप देख सकते हैं काफी स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं कि प्रभाकर स्कूल वो खुद ओल्डर है कुमारला स्कूल से। हमें हिस्ट्री पता नहीं लगती है क्योंकि मैनी अ टाइम्स हम बीच में नॉलेज देते रहते हैं, व्यंग्य भी करते हैं कि जैसे मैं अपने दोस्त को बोलूँगा गुरुजी कहाँ हो, वैसे व्यंग्य पहले भी होते होंगे। तो क्या हम उसके बेसिस पे बोल रहे हैं या किस टाइप से हम बोल रहे हैं, दैट इज वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। वैलिडिटी ऑफ नॉलेज पे आते हैं। सिमिलैरिटी, बोथ कुमारिला एंड प्रभाकर एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ स्वतः प्रमाणवादा। According to them, both knowledge is in self valid. It does not require external source of validity to validate itself. Hence, the knowledge is intrinsically valid. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आज के डेमोग्राफिक और आज के सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए। कुमारिला और प्रभाकर स्कूल कहते हैं कि जो भी हमने नॉलेज अपने सामने देखी है, हम उसको ही प्रॉपर और नॉलेज मानेंगे विदाउट एनी डिफेक्ट्स, और हमें किसी और की वैलिडेशन नहीं चाहिए। But many a times you see many politicians who are running for validation. Many of the schools are also running for validation. That is the problem that we are facing right now. जैसे ट्रम्प साहब की बात करता हूँ, ट्रम्प की बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें वो कहते हैं ओके, Putin said that Trump is very smart, and all these validations from Putin is coming to Trump. That means it is not a real knowledge. You are asking someone else for the validity, right? So ये जो validity का सवाल है, जब हम किसी और से अपनी validation लेने लगते हैं, then that is the problem that is happening when it comes to these sources. Difference according to Kumarila, valid knowledge is anubhuti or apprehension produced by no defects and no contradiction of by subsequent knowledge. According to Prabhakar, valid knowledge is anubhuti or apprehension. It is immediate, direct and valid in nature. डिफरेंस क्या है दोनों में? कुमारिला वैलिड नॉलेज को अनुभूति या apprehension produced with no defects and no contradiction by subsequent knowledge. According to Prabhakar, valid knowledge is anubhuti or apprehension. It is immediate, direct and valid in nature. दोनों चीजें almost similar ही हैं, but you have to just know the few differences. The source of knowledge or pramanas. According to both Kumarila and Prabhakara, knowledge of the two types, immediate and immediate, perception is an example of immediate knowledge or direct apprehension. Both except Shabd and the eternity of Vedas is valid knowledge in itself. Difference according to Prabhakara, there are five means or sources of valid knowledge or pramanas. They are perception, inference, verbal testimony, compassion, postulation. According to him, perception is defined as direct apprehension. He believed inference involved previous knowledge in various previous knowledge and involves the things already known. यानी कि obviously अगर मैं कोई चीज already पता है मुझे, तभी मेरे को परसेप्शन मिलेगा, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू परसीव। सेम जो मैंने आपको स्नेक का एग्जांपल दिया था, दैट इज द सेम थिंग। अर्थपटी all postulation remains inconsistent without assumption. According to Kumarila, there are six means or sources of valid knowledge. They are perception, inference, comparison, postulation, non-apprehension and verbal testimony. ये भी यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन इससे बन जाता है, जिसमें अर्थपति और पोस्टुलेशन रिमेन्स इनकंसिस्टेंट विदाउट assumption. According to Kumarila, there are six means or source of valid knowledge. They are perception, inference, comparison, postulation, non-apprehension, verbal testimony. He makes novelty as an essential feature of inference pramana. Arthapati helps us reconcile between the two inconsistent facts. Lastly, non-apprehension or abhava is an independent pramana. As we have read before कि अगर non-apprehension है, कोई अभाव है, तो उसे independent प्रमाणा माना जाएगा. Due theory of error और ख्याति. ये ख्याति में कंफ्यूज मत होना कि इनको ये ख्याति मिली है, नहीं. एरर
है ख्याति का इसमें मीनिंग। डिफरेंस, Prabhakar accepts the theory of Akhyativada. It is a theory of error which does not admit of error in the logical sense. According to the theory, there is no logical distinction between knowledge and error. It believes in intrinsic validity of knowledge. So all knowledge is valid per se and error is only partial truth. Suppose I say that I am reading, what I am reading, when I am reading. All these things are partial truth. I am reading, but क्या read कर रहा हूँ, कहाँ से read कर रहा हूँ, that is an error. That is known as the अख्यातिवाद, जिसमें मैं कहीं ना कहीं partial truth आपको दे रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, आई एम मेकिंग यूट्यूब लाइव एंड उसको उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ, बट मैंने बस ये बोला कि आई एम रीडिंग, व्हाट आई एम रीडिंग, क्या रीड कर रहा हूँ, लैपटॉप से कर रहा हूँ, मीडियम एंड वेरियस अदर थिंग्स, ये सारी चीजें अख्यातिवाद में आएंगी। द कंसेप्ट ऑफ इसमें और भी है, इन अदर वर्ड्स, एरर इज ओनली इम्परफेक्ट नॉलेज, एरर इज ओनली रिगार्डेड एज नॉन एप्रीहेंशन, error can never be regarded as unitary knowledge. Error is due to non-discrimination between the two cognitions. Error is regarded as commission, not omission. Kumarila accepts the theory of विपरीत ख्यातिवाद। तो ये विपरीत ख्यातिवाद है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, अगर कुमारिला बोलते हैं तो विपरीत ख्यातिवादा होता है, और प्रभाकर होता है तो अख्यातिवादा होता है। There is a logical distinction between a truth or knowledge and error. Error is misapprehension, not non-apprehension. Error is regarded as unitary knowledge and not a composition of two imperfect cognitions. Error is regarded as omission, not commission. Error is due to positive wrong synthesis of two elements, the perceived and the remembered. यानी कि जो भी हम परसीव नहीं कर पा रहे, that is imperceived. बट अगर हमने परसीव ही रॉन्ग कर दिया, that is an error. अगर मैं कह रहा हूँ कि आई एम जस्ट स्पीकिंग, दैट इज एन एरर, आई एम ऑल्सो रीडिंग। बट अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन मिसिंग कर देता हूँ, दैट इज अख्यातिवाद। बट अगर मुझे परसेप्शन ही रॉन्ग हो गया है, दैट इज विपरीत ख्यातिवादा, विच इज बाय कुमारिला, एंड अख्यातिवादा इज बाय प्रभाकरा। देयर इज नाउ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, हम, माँ माती मानुष, just kidding. Similarity. Both Kumarila and Prabhakara believe in the plurality of self or the individual soul. They regard soul as eternal, infinite substance, which is the substratum of consciousness and which is karta, bhokta and jnana. सिमिलैरिटी यही है कि दोनों लोग यही मानते हैं कि कर्ता भोक्ता एंड ज्ञान, दे आर इटर्नल एंड दे रिगार्ड सोल एज इटर्नल, इनफाइनाइट सब्सटेंस व्हिच इज सबस्ट्रेटम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड व्हिच इज कर्ता भोक्ता एंड ज्ञान। वो सबस्ट्रेटम, कर्ता भोक्ता एंड ज्ञान, द नोअर इज नोन, बट जो सोल है इटर्नल, दैट इज फ्री फ्रॉम द बॉडी। कल को मेरी बॉडी खत्म भी होती है, इट्स ओके, बट सोल विल रिमेन इन इटसेल्फ। द कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन, सिमिलैरिटी. अकॉर्डिंग टू बोथ कुमारिला एंड प्रभाकरा, liberation is cessation from pain and suffering or freedom, the pain and suffering. Both accept Kumar Kanda and believe that liberation is possible only via the name of karmas or action. Similarity. According to both Kumarila and Prabhakara, liberation is cessation from pain and suffering or freedom from pain and suffering. Both accept Karma Kanda and believe that liberation is possible
only via the means of karmas or action. Difference, according to Prabhakara, Vedas are an end in itself. So obedience to Vedas is an end to itself. In other words, according to him, the action or the acts of duties mentioned in the Vedas are performed as duties for duty's sake. The acts are performed for the sake of the act and not for the desired results. वेदास में जो भी लिखा है उसमें में रिजल्ट की इच्छा नहीं होती, उसमें जो कर्म लिखा है वो करना ही है। अगर आपको रोज मंदिर जाना है वो जाना ही है। आप मांगने जाते हो वो अलग बात है, लेकिन यू हैव टू गो टू टेम्पल एवरी डे, दैट इज रिटन एंड यू हैव टू डू इट विदाउट एनी रीजनिंग फॉर दैट. The acts are performed for the sake of the act and not for the desired results. According to him, liberation is not a state of bliss. On the other hand, Kumarila believes in psychological hedonism. It means, according to Kumarila, we perform actions in order to attain liberation. In other words, actions are the means which we perform in order to realize the end, liberation. According to Narayana Bhatta, liberation is the state of bliss. Narayana Bhatta is also a philosopher. See, जब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आपको फिलोसोफर्स के नाम याद रखने ही पड़ेंगे। मैं ये जो वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ ये इसलिए भी बना रहा हूँ कि आपको आगे जाके अगर आप बाय चांस you are preparing for UGC NET, you can hear this entire thing live on audio. That is why मैं बीच में ब्रेक नहीं दे रहा हूँ। मैं जो 1 hour का ड्यूरेशन है that all I am giving, so that actually you can complete your theory. तो ये मैंने जस्ट अभी थोड़ा सा डेविएट हुआ बुक से पहले जो बेसिक चीजें हैं वो मैं कवर करके देन आई विल गो बैक टू द बुक. आई विल डेफिनेटली कंप्लीट द बुक विद इन 6 months ऑफ दिस जर्नी दैट वी आर डूइंग टुगेदर. हम ये पूरी बुक्स कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट यूजीसी नेट जो 2025 दिसंबर या जनवरी में होगा, जब भी होगा. तो अब आते हैं. वेदास आर डिवाइडेड इनटू मंत्रास, ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषद्स. जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, हमने उसका पहले जो जो पंडित एसोसिएटेड है वो भी देखे. अब हम ये देखने वाले हैं कि उनमें होता क्या है. मंत्रास होते हैं, ब्राह्मणास होते हैं, आरण्यकास होते हैं और उपनिषद होते हैं. मंत्रास एंड ब्राह्मणास डील विद कर्म कांडा विच आर एक्सेप्टेड बाय पूर्व मीमांसा. नाउ व्हेन आई से एक्सेप्टेड, नाउ अब आपको पता लग गया होगा जब भी मैं एक्सेप्टेड की बात करता हूँ उसका मतलब ये होता है कि ये सारी चीजें वो पढ़ाते हैं और आगे पढ़ते भी हैं, एंड दे नो द एंटायर थ्योरी बिहाइंड द सेम. That is why it is saying that जो कर्म कांड है, मंत्रास एंड ब्राह्मणास डील विद कर्म कांडा, they are accepted by पूर्व मीमांसा, जैसे जो पूर्व मीमांसा, the older मीमांसा. As a result, पूर्व मीमांसा also known as कर्म मीमांसा. तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कर्म मीमांसा क्या है तो वो पूर्व मीमांसा ही है. According to the school, liberation is possible via karma or action. The founder of Purva Mimamsa school is Jaimini. जैमिनी पे भी सवाल आए हैं कि पूर्व मीमांसा स्कूल या कर्म मीमांसा स्कूल के फाउंडर कौन थे. उनका नाम था जैमिनी. जैमिनी एक्सेप्ट्स 3 प्रमाणास और सोर्स ऑफ नॉलेज, नेमली परसेप्शन, इन्फरेंस एंड वर्बल टेस्टिमनी. अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं कि जैमिनी कहते हैं कि एक तो जो आपने परसीव किया डायरेक्ट, दैट इज द ट्रू नॉलेज. इन्फरेंस, क्या आप इन्फर कर रहे हो कि अगर मेरे दोस्त ने कुछ ऐसा किया, मैं उसके साथ कुछ ऐसा कर रहा हूँ, या फिर उसने मेरे को ये बताया कि मेरे साथ ये हुआ, दैट इज इन्फरेंस. कि हम इन्फर कर, या फिर इन्फरेंस आप ये भी ले सकते हैं, आग जल रही है और आग जल रही है और धुआं ऊपर उठ रहा है, तो हम धुएं से इन्फर कर रहे हैं कि आग जल रही है, दैट इज इन्फरेंस. एंड वर्बल टेस्टिमोनी में ये आ गया कि मैं वर्बली किसी को बता रहा हूँ यार मेरे साथ ऐसा हुआ था. अब नाउ वर्बल टेस्टिमोनी भी जैमिनी एक्सेप्ट करता है. अभी का टाइम है वेयर पीपल आल्सो गिव फॉल्स टेस्टिमोनीज एज वेल. इसीलिए देयर रेट ऑफ डिवोर्स रेट्स एंड वेरियस अदर थिंग्स आर हैपनिंग
when we stop doing falsified verbal testimonies, then definitely we will actually look forward for a better world, जिसमें जैमिनी जो थे वो पहले ही बोल चुके थे कि इन्फरेंस, परसेप्शन और वर्बल टेस्टिमनी को हम टोटल ज्ञान मानेंगे। जब हम रिसर्च पेपर भी लिखते हैं, रिसर्च पेपर में वी आर एक्चुअली going ahead with the verbal testimonies of the researchers who have gone ahead and done the research in the past. Next is Shruti. The main aim of Purvamamsa school is to ascertain the nature of Dharma. Dharma, according to them, cannot be apprehended via the sense because it does not have a physical existence. As a result, the pramana such as the inference, comparison, postulation, etc. are of no use, for they all presuppose the work of perception. यानी कि एज अ रिजल्ट इन्फरेंस, कंपैरिजन और पोस्टुलेशन वो आप प्री सपोज करते हो कि वर्क ऑफ परसेप्शन के, जैसे कंपैरिजन, हिंदू मुस्लिम, नॉर्थ साउथ, वी परसीव थिंग्स कि अगर एक बंदा नॉर्थ से साउथ में जाएगा, क्योंकि न्यूज ऐसी आई है दैट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, कर्नाटका में कन्नड़ा बोलनी पड़ेगी, महाराष्ट्र में मराठा बोलनी पड़ेगी, तमिल में तमिल, केरला में मलयालम और उड़ीसा में ओडिया, ऐसे ही सारा चल रहा है। तो वो परसेप्शन है, ट्रुथ नहीं है। अब मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी कर्नाटका में हूँ, बट the truth might differ from different people. Many people who are faced in Uttar Kannada, they would be facing problems, but I am in Dakshin Kannada. यहाँ पे इतना नहीं है। तो these are the things that they presuppose the work of perception. Dharma, or the knowledge of dharma, is possible only through the Vedas via the means of Shruti. Vedas deal with the act of duties, dharma, and they precise duties or actions which lead to beneficial results or the performer for the performer. According to Jaimini, Vedas are eternal in nature, for the words they are composed of are eternal. In other words, the relation between the words of Vedas is natural and not created by convention. So Vedas manifest their own reality and validity. Hence, according to the Purvamamsa school of Jaimini, Vedas are apaurushaya or authorless. They are eternal in nature, and because they are authorless, they are also defectless. मैं कोई चीज ऑथर करूँगा, कुछ गलत होगी, but they are saying the Vedas are eternal. They are not having any problem. Probably this would also be postulated to the use of Sanskrit, because Sanskrit is that language जिसमें आप पाणिनीज अष्टाध्यायी में देखेंगे, या फिर जो भी आप उसकी सेंटेंस मेकिंग में देखेंगे, इवन इफ यू आर अटरिंग एनीथिंग रॉन्ग, यू विल गेट कॉट कि हाँ ये सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि उसके अंदर आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, कौन सा आपने उसमें मीटर लगाया है, that is also there. So many of the things are attributed to that as well. Shruti Vakyas. According to the school, the content of Vedas are classified into 5 categories, जिसे हम श्रुति वाक्यास कहते हैं: इंजंक्शन और द विधि, हाइम्स, मंत्रास, नेम्स और नामधेय, प्रोहिबिशन और निषेध, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, एंड एक्सप्लेनेटरी पैसेजेस और अर्थवाद। इंजंक्शन की विधि क्या है, क्या कैसे आपको रिचुअल एक परफॉर्म करना है, हाइम्स मंत्रास के कौन कौन से मंत्र पढ़ने हैं, नेम्स क्या क्या नेम है, क्या क्या नाम है, प्रोहिबिशन क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए ये भी बताया गया वेदा में, एंड एक्सप्लेनेटरी पैसेजेस जैसे अर्थवाद, क्या क्या अर्थ है उसका। अब हम इन सब चीजों का दिस वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. Injunction, they deal with details or sacrifices. In other words, they explain how sacrifice needs to be carried out, etc. Injunctions compel one to act, to perform an action for a certain desired results. For example, swarga karma yeta. In order to attain the desired heaven, one has to perform sacrifices. Their hymns, they remind the one performing the sacrifice to remain connected to the act of sacrifice. For example, mantras remind the sacrifice of the oblation
to be made to the deities. Some mantras also possess mystical and supersensuous effects. In a way, they contribute directly to transcendental results. They are called the apurva. Times को अपूर्व भी बोला जाता है. Names deal with the results or the conclusion of the action. They are that are to be obtained from performing the act of sacrifice. Prohibition, they are only injunctions or vidhi in disguise. Explanatory passages, they deal with those sentences which deal with either the praise of the thing, enjoy, or prashansa, or contain things to be prohibited or things to be refrained from or ninda. They also contain the description of doings of others or prakriti or instances from history और पूर्व कल्प. यानी कि पहले क्या क्या चीजें हो रखी थी उसके बेसिस पे भी अर्थ दिया होता है ताकि आप डिफाइन कर पाओ कि प्रोहिबिशंस क्यों हैं. All these things together are called अर्थ संग्रह. यानी कि अर्थ संग्रह को ये सारी चीजें बोली जाती हैं. ये अब तक नहीं आया यूजीसी नेट पे, बट अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए. These things are not asked yet in UGC net. I hope ये क्लास आपको पसंद आई हो. आई नो एक दिन की छुट्टी होगी, उसके लिए रिकवरी क्लास भी होगी, बिकॉज मेरा एम ये है कि मैं 7 days 7 क्लासेस से कंटिन्यू रखूं, तभी ये पूरा सिलेबस एंड हो पाएगा. I hope you like this video. If you like this video, please kindly like, share and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video. Jai Shri Ram.